औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। मेरा क्लास आज 8th है, सब्जेक्ट है मैथ्स, टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आज की डेट है 13 जुलाई 2021। तो इसमें हम पहले देखेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन किससे कहते हैं। We have learned earlier that 5 into 5 into 5 can be written as 5 raised 5 cube, can be written as 5 cube. So we read 5 cube as 5 raised to the power of the 3. 5 raised to the power, यानी इसको हम क्या पढ़ते हैं 5 raised to the power of 3। हम इसको पढ़ते हैं 5 raised to the power of 3। In 5 raised to the power of 3, 5 जो है the number 5 is called base। 5 को base कहते हैं and 3 is called the exponent or the power। और 3 को पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। यानी 5 जो है इसको बेस कहा जाता है और 3 जो है इसको एक्सपोनेंट और पावर कहा जाता है। सिमिलरली इन 3 raised power 4 raised to the power 4, 3 is called the base and 4 is called the power or exponent. If a is any rational number, then a into a so on raised m times is equal to a raised power m. Here a is called the base and m is called the power or exponent. फिर zero exponent किसे कहते हैं? If x is any rational number or natural number and x is not equal to 0, मगर x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, then x raised to the power 0 is equal to 1। यानी इसका मतलब ये है any number raised to the power 0 which is equal to 1। कोई भी नंबर जिसका पावर या एक्सपोनेंट 0 हो वो 1 के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 raised power 0 is equal to 1, 100 raised power 0 is equal to 1, 1000 raised power 0 is equal to 1। नेगेटिव एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? इफ x is a rational number different from 0, then x raised to the power -1 denotes the reciprocal of x। x raised to the power -1 किसको डिनोट करता है? रेसिप्रोकल ऑफ x। रेसिप्रोकल ऑफ x का मतलब है 1 by x, यानी x raised to the power -1 बराबर होता है 1 by x। We know that the reciprocal of x is 1 by x, therefore x raised to the power -1 is equal to 1 by x। Similarly 3 raised to the power -1 is equal to 1 by 3, 7 raised to the power of -1 is equal to 1 by 7, 100 raised to the power of -1 is equal to 1 by 100। फिर laws of exponents, exponents के laws क्या हैं? We have learned that, ये हमने 7वीं में भी पढ़ा होगा कि any non-zero integer a, पहला लॉ है a raised power m into a raised power n is equal to a raised power m plus n। तो जैसे हम कह सकते हैं in multiplication when bases are same powers should be added, powers को जमा किया जाता है। फिर दूसरा इसका लॉ है a raised to the power of m divided by a raised to the power of n, यानी a raised to the power of m divided by a raised to the power of n, ये किसके बराबर होता है? a raised to the power m minus n। यानी in division जब bases are same, in division when bases are same powers are subtracted, in division when bases are same powers are subtracted, where a raised power m divided by a raised power n is equal to a raised power m minus n। फिर इसका थर्ड लॉ है a raised to the power of m into b raised to the power of n। m in multiplication when powers are same, when exponents are same, तो बेस को क्या किया जाता है? बेस को आपस में मल्टीपल किया जाता है और पावर एक ही लिखा जाता है। जैसे a raised power m into b raised power m is equal to a into b raised power m, a into b raised power m। फिर इसका चौथा लॉ है a raised power m whole raised power to the n is equal to a raised power m into n, a raised power m into n। पांचवा लॉ है इसका a raised power m divided by b raised power m, a raised power m divided by b raised power m is equal to a by b raised power m, a by b raised power m, where m and n are any integers।
फिर हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 11.1 एवेलुएट। पहला पार्ट है 3 रेज पावर -2, दूसरा पार्ट है -4 रेज पावर -2, तीसरा पार्ट है 1/2 रेज पावर -5। तो सोल्यूशन पहला पार्ट 3 रेज पावर -2 इज इक्वल टू 1/3 रेज पावर 2, क्योंकि ये 3 रेज पावर -2 जो है x रेज पावर -1 इज इक्वल टू 1/x रेज पावर 1 is equal to 1 by, यानी therefore 3 raised power -2 is equal to 1/3 raised power 2 is equal to 1/3 into 2, 3 into 3 यानी 3 square, 3 into 3 is equal to 1/9. Second part है -4 raised to the power of -2 is equal to 1/-4 raised power 2 is equal to 1/-4 into -4, which is equal to 1 by minus is plus, 4 4s are 16, 1/16. फिर इसका थर्ड पार्ट है 1/2 रेज टू द पावर -5 इज इक्वल टू 1 रेज टू द पावर ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ -5 विच इज इक्वल टू 1/1 रेज पावर 5 इंटू 2 रेज पावर 5, यानी 2 ऊपर चढ़ता है तो ये होगा 2 को 5 बार देना है ज़रूर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 32, 2 2s are 4, 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. फिर है क्वेश्चन नंबर 2, सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। सिंपलीफाई करना है और रिजल्ट हमें निकालना है, जवाब निकालना है हमें पावर नोटेशन में विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सपोज पहला पार्ट है -4 रेज पावर 5 डिवाइड बाय -4 रेज पावर 8, यानी इन डिवीजन एंड बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो -4 रेज टू द पावर 5 divided by -4 raised to the power of 8, because a raised to power m divided by a raised to power n is equal to a raised to power m minus n, therefore -4 raised to the power of 5 divided by -4 raised to the power of 8 is equal to -4 raised to the power of 5 minus 8। पावर उसको सब्ट्रैक्ट होता है, -4 raised to the power of -3, अब ये क्या बन गया, x raised to the power of -1 is equal to 1 by x raised to power n, which is equal to 1 by -4 raised to power 3। ये इसका आंसर आया, यानी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फिर है सेकंड पार्ट इसका 1/2 रेज पावर 3 होल रेज पावर 2 विच इज इक्वल टू 1/2 रेज पावर 3 होल रेज पावर 2 इज इक्वल टू 1 रेज पावर 2 डिवाइड बाय 2 रेज पावर 3 होल रेज पावर 2 इज इक्वल टू 1 into 1 means 1 divided by 2 raised power 2, 3s are 6, and a raised power m into n is a raised power m into n, which is because a raised power m whole raised power n is equal to a raised power m into n, तो which is equal to 1/2 raised power 6 इसका आंसर आता है। फिर है इसका थर्ड पार्ट -3 raised power 4 into 5/3 raised power 4 is equal to -3 into -3 into -3 into -3 divide into 5 raised power 4 divided by 3 raised power 4, which is equal to -3 into -3 into -3 is equal to 81 into 5 raised power 4 divided by 3 into 3 into 3 is equal to 81, 81 and 81 will cancel, which is equal to 5 raised power 4 इसका आंसर आया, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो इसका आंसर आया 5 raised power 4। फिर है इसका चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट है 3 raised power -7 divided by 3 raised power -10 into 5 3 raised power -5, which is equal to, पहले इन दो को हम देखेंगे, when bases are in division and bases are same, powers are subtracted, 3 raised power -7 minus into -10 which is equal to 3 into 3 raised power -5, यहाँ पे मैंने लिखा because a raised power m divided by a raised power n is equal to a raised power m minus n, which is equal to 3 raised power -7 plus 10 which is into 3 raised power -5 which is equal to 3 raised power -7 into plus 10 हो गया 3 raised power 3 into 3 raised power -5 which is equal to 3 raised power 3 minus 5, in multiplication bases are same, powers are added, which is equal to 3 raised power 3 into 3 raised power -5 is equal to 3 raised power 3 plus 5 plus -5, 3 raised power -2, माने -5 में से हम 3 उतारते हैं, which is equal to 3 raised power -2। अब ये x raised power -1 is equal to 1 by x raised power 1, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 raised power -2 is equal to 1 by 3 raised power 2। तो उम्मीद है कि समझ आया होगा। अगली क्लास तक दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।